Good evening. The arrest of two key accused in the Rameshwaram Cafe blast in Bengaluru have been tracked to Bengal's East Midnapore district. That's our top story. This was a joint operation with the state police and is seen as a major breakthrough in the probe. But the development has also triggered a predictable political slugfest between the state's ruling Trinamool Congress and the opposition Bharatiya Janata Party. The two men who plotted and executed the blast that rocked Rameshwaram Cafe in Bengaluru last month, arrested by the NIA more than 1700 kilometers away from Kanthi in Bengal's East Midnapore district. In a statement, the NIA said the available evidence indicates that Mussavir Hussain Shazeb planted the bomb placed inside a backpack at the popular eatery, while Abdul Matheen Taha was responsible for planning the attack and for their disappearance. Residents of Karnataka's Shivamoga district, Shazeb and Taha were traced to Kanthi after officials conducted searches at 18 locations across Karnataka, Tamil Nadu and even Uttar Pradesh. The accused were living under false identities in Bengal. All electronic devices, laptops, mobile phones of different companies, SIM cards, VPN machines, everything has been all digital evidence, digital things has been recovered from them. We'll just show you the room that they stayed in, and this of course is the room where they stayed in. Room number 8 is where they stayed in this hotel, and of course this is something that obviously happened while they were looking for a place to stay. The room is locked now. Room number 8 is where these two accused, the main accused in the Bengaluru Rameshwaram Cafe blast accused, stayed in at this hotel in Calcutta. The arrest of the two key accused triggered a predictable political slugfest between the state's ruling Trinamool Congress and the opposition Bharatiya Janata Party ahead of the Lok Sabha election. Chief Minister Mamata Banerjee hit back at barbs that the state had become a safe haven for terrorists under her rule. सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि पश्चिम बंगाल हर प्रकार के आतंकी और जिहादी और इस प्रकार के उग्रवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक सेफ हेवन, एक अड्डा क्यों बन चुका है? আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর বিহার সেফ। বাংলার মানুষ শান্তিতে থাকে, বিজেপি সহ্য হয় না। Politics aside, what can be appreciated is that agencies reporting both to the union government and to the state government have worked together, cooperated with each other to bring suspected terrorists in the Rameshwaram Cafe blast to book. With camera person GD Shankar in Kolkata, Saurabh Gupta, NDTV. Ravaged by floods after unprecedented rainfall in December last year, the Thoothukudi Lok Sabha seat is dominated by the DMK leader Kanimodi Karunanidhi. She is being challenged by a young and fiery AIA-DMK natural medicine practitioner Sivakami Velumani. NDTV's Veera Raghav has the story. As she launches herself into an election campaign, Kanimodi Karunanidhi is fighting from the Thoothukudi seat to reassert her grip over a constituency she entered in 2019. The persona of the daughter of the late DMK leader and 5-time Chief Minister M. Karunanidhi dominates the contest here. But it's also accusations of her family controlling power in the state. That's the main campaign plank of the BJP. DMK और कांग्रेस जैसी फैमिली पार्टियों का एक ही एजेंडा रहता है, किसी भी तरह झूठ बोलकर सरकार में बने रहो. With the Prime Minister leading the charge on family rule against his Dravidian opponents. गरीबी हटाओ का नारा दिया. I don't think the BJP is in a position actually to point fingers at anybody else, because there are many so-called dynasts in BJP, and I think most of the royal families in India have been given seats by the BJP.
So we shouldn't be they shouldn't be talking about dynastic politics. Well, the BJP is the national enemy. Locally in Thoothukudi, Kanimuri's challenger is this man, Sivaswamy Velumani. The 38-year-old practitioner of natural medicine is a first-time contestant from a politically entrenched family and is on a fiery campaign focused on local issues and corruption against Kanimuri. உங்களோட சான்சஸ் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? என்ன ஸ்ட்ராங் நினைக்கிறீங்க கனிமொழி அவர்கள்? 2Gல ஸ்ட்ராங்கா? எதுல ஸ்ட்ராங்? 2G ஊழல் வழக்குல ஸ்ட்ராங். வேற என்ன ஸ்ட்ராங்? இந்த ஊர் மக்களுக்கு ஒண்ணுமே செய்யல. இந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட அவங்ககிட்ட யார்கிட்டயுமே நல்ல பேர் இல்ல. இந்த 5 வருஷம் எம்பியா இருந்திருக்காங்க. இந்த ஊர் மக்களுக்கு எந்த ஒரு நலத்திட்ட பணிகளும் செய்யல. One of the key focus points in Sivaswamy's campaign is the devastating floods of December 2023 and allegations that relief and rehabilitation measures were inadequate. This nondescript Sri Vaikuntham railway station hit the national headlines during the floods here in Thoothukudi. An entire train with about 800 passengers, the Tiruchendur-Chennai Express, was stranded here during those floods, and the local villagers here helped the passengers till a massive rescue operation was mounted. While the train moved on and the passengers moved on, for the people here, memories of the floods remains fresh and could become an important electoral issue. The temple town in the banks of the Tambarabharani river has many a horror story to tell of the inundation. Arul Kumar, who's a tailor in Sri Vaikuntham, says people in the town may have recovered, but those in the villages remain in distress. விவசாயம் கொஞ்சம் நிறைய அடிகள், அப்புறம் ஆறுலாம் நிறைய தண்ணிலாம் ஃபுல்லாக இங்கே ஆறுலாம் உடச்சி உள்ளுக்குள்ள வந்துருச்சு, அப்புறம் மழை தண்ணியில் நிறைய உடஞ்சி உள்ளுக்குள்ள வந்துருச்சு, அப்புறம் இந்த சைடில் பெரிய ஒரு ஏரி உண்டு, அதுவும் உடஞ்சி ஊரில் எல்லாம் சூழ்ந்து மொத்தமாக இதாகிடுச்சு, ஜிஹெச்லாம் ஃபுல்லாக பொங்கிடுச்சு. கிராமத்தில் அதை பற்றி பாதிப்பு இருக்குது, இந்த ஆடு மாடுகள் நிறைய செய்யறதுனால அது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. சிட்டிக்குள்ளே கொஞ்சம் அதை பற்றி பேசுறது கிடையாது, வேலை உண்டு அவங்க போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. Munishwari, who runs this fruit shop, breaks down as she recounts the ordeal and the struggle after. அவங்களாம் யாருமே இப்போ கொடுக்க வெளில பாதிக்க இல்லாதவங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க, பாதிச்சவங்களுக்கு யாருக்குமே எதுவுமே கொடுத்ததே கிடையாது. எனக்கெல்லாம் ரொம்ப அடி, எதுவுமே எதுவும் வந்து கடன் வாங்கி தான் போட்டிருக்கேன் சார், கடன் வாங்கி தான் போட்டிருக்கேன். ஆமாம், மீண்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் படம் நினைச்சி ஆயிக்கணும். While the local issues have strong resonance, the larger national confrontation and the battle against the BJP is the dominant theme of the Kanimuri campaign. But the narrative is that we want a secular country, we want a free country, we want freedom of expression for you also, especially journalists. They practically witch hunted, and we need a country which believes in the constitution. The electoral bonds, the Supreme Court of India has called it unconstitutional. Will it be this national theme that will triumph? Or will the young and energetic first-time contestant have the last laugh? That's the Thoothukudi contest in 2024. In Thoothukudi, Raghav for NDTV 24/7. In an exclusive interview to NDTV, Arjun Ram Meghwal, the Union Law Minister who is contesting from Bikaner in Rajasthan, has said that he is confident his party will improve upon its 2019 performance. Among the seats going to polls in the first phase is also seats from Rajasthan. Joining me now is a Member of Parliament and also Union Law Minister Arjun Ram Meghwal. Meghwal ji, thank you so much for speaking to NDTV. You are fighting from Bikaner. BJP did very well in Rajasthan, scoring full 100 on 100. What do you think will happen this time? इस बार बड़े अंतर से पूरी की पूरी सीटें आएगी. इस बार का वातावरण अलग है, डिफरेंट वातावरण है और फील्ड में बहुत अंडर करंट है. जो मोदी जी ने 10 साल काम किया है, योजनाएं नीचे तक पहुंची हुई है.
मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, मुझे तो बीकानेर ऐसा लगता है इस बार की सीट बहुत बड़े अंतर से हम बीकानेर की सीट जीत रहे हैं। लेकिन मेघवाल जी, सवाल तो ये है कि आप लोग जरूर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की भी है। बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जिनको पार्टी ने बदला भी है, नए चेहरे भी लाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का चुनाव मोदी की गारंटी पर होगा? देखिए, मोदी जी ने वर्क कल्चर बदल दिया। मोदी जी ने 112 योजनाएं इस देश में लागू की और उन योजनाओं के माध्यम से वो ढाणी गांव-गांव पहुंच गए। अब मोदी जी से पहले भी शौचालय रहे होंगे, पर बहुत कम मात्रा में। लेकिन जब मोदी जी ने 2.5 करोड़ शौचालय बनाए तो लोगों के घरों में मोदी जी पहुंच गए। अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों के पास अन्न जा रहा है, तो पता ही है ना मोदी जी भेज रहे हैं। उसके बाद जिनके कच्चे घर थे उनके पक्के घर हो गए, जिनके इलाज नहीं होता था आयुष्मान भारत से इलाज हो गया, जिनके अब पानी नहीं आता था नल से जल योजना के तहत जल जीवन मिशन से पानी आने लग गया। गर्भवती माताएं, उनके जो पेट में 15 बच्चा होता है वो कभी कभी कुपोषण का शिकार हो जाता था, तो प्रतिमाह 5,000 रुपए मातृ वंदना स्कीम से भेजने लग गए। तो सबको पता चल रहा है ना कि मोदी जी ये चीज हर सेक्टर के लिए मोदी जी सोच रहे हैं, मोदी जी चिंतन कर रहे हैं। अब आप देखिए, पानी महिलाएं लाती थी दूर से तो उनका समय लगता था, अब लगता है कि पानी हमारे घर में आ गया तो हम इस समय का समाज निर्माण में, परिवार को संवारने में, बच्चों को संस्कारित करने में हम समय लगा सकते हैं। उनको भी पता है कि हमें समय मिला परिवार को संवारने का। किसान सम्मान निधि से किस्तें जारी है। दूसरा, डीबीटी ने बहुत बड़ा काम किया था, ये आपके और ध्यान में तो रहा होगा, लेकिन ये तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, इसने बहुत बड़ा काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा जब नीचे उसके खाते में चला जाता है तो वो देखते हैं ये है मोदी जी। पहले लोग सोचते थे 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए ही पहुंचता है। अब वो 100 रुपए पूरे के पूरे पहुंचते हैं उसके खाते में, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स होनी चाहिए ना, ये उसी का ही नतीजा है कि हर जगह ये वातावरण है कि मोदी जी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। आप लॉ मिनिस्टर हैं। 1980 में जब भाजपा का गठन हुआ उस वक्त से एक इशू बहुत अहम रहा है पार्टी के लिए, वो है यूसीसी भी। राम टेम्पल और आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो चुका है। क्या अगला टर्म अगर होगा तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार लाएगी? अच्छा, आप भी मानते हैं कि 2 तो पूरे हो गए ना? तो हमने जो जनता से वादे किए उनको पूरा करने की ओर ही बढ़ रहे हैं। अब जो यूसीसी का मसला है, ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर आधारित रहेगा और राज्य सरकारें भी इसमें सक्षम है, तो अपने अपने ढंग से राज्य सरकारें भी काम कर रही है। गोवा में पहले से ही था, उत्तराखंड ने अपना कानून पास किया, और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि तीसरे टर्म में कुछ बड़े बड़े काम, जैसे पाकिस्तान पानी अभी तक जा रहा था, लेकिन हमने कभी इंडस्ट्री की समीक्षा होगी ये सोचा ही नहीं। जब देश आजाद हुआ तो 3 नदियां पाकिस्तान को मिली, 3 भारत को मिली, लेकिन वो पाकिस्तान की और झुकता हुआ समझौता था। वर्ल्ड बैंक अलग से पंचायती करता था। तो ये जो हमारा एरिया है, रेगिस्तान या कुछ एरिया जहाँ अकाल और सूखा ज्यादा पड़ता है, वो कहते हैं पानी की समस्या का भी समाधान होना चाहिए, हमारा पानी है। तो ये जो समीक्षा की बात, पाकिस्तान जाने वाला पानी जो अननेसेसरी जा रहा है, हमारे हक का भी जा रहा है, उसको रोकने का मुद्दा, ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसमें आपने जिक्र किया, वो भी बड़ा मुद्दा है। ये सब देश हित में निर्णय लिए जाएंगे आने वाले समय में। Well, down south in Thiruvananthapuram, Shashi Tharoor, the senior Congress leader, says the BJP has weaponized the CBI and that India is being seen as an electoral autocracy. Political temperature is quite high here in Thiruvananthapuram. It's become a personality clash between Rajiv Chandrasekhar and you. Rajiv says
You have done this personality contest primarily because you've engaged in personal attacks, primarily because you want to hide your, whatever failings have been there as a member of parliament. I have no particular failings I'm aware of. I believe I've had an outstanding track record as a member of parliament for Thiruvananthapuram. I have a 66-page report of achievements and detail in Malayalam which people are reading and reminding themselves. And at the same time, I think most of the country knows me as somebody who has spoken up effectively on all the major debates facing the country. So I don't see where the failings are, except obviously somebody who has not been in Trivandrum for the last 15 years, like Mr. Chandrasekhar. He can only say these things because he doesn't know the reality. Well, as you say that, sir, in terms of this personality clash between you and Rajiv Chandrasekhar and the optics of it seems to have squeezed out the CPI candidate and an ex-MP. First of all, there is no personality clash. It is a clash of ideology. As you make that point, and I'm asking you, with the left and the Congress being national allies in a parliamentary election, is it clearly a precursor to things to come that Kerala is becoming a Congress versus BJP battle? May not be in terms of vote shares, but in terms of the larger narrative in Kerala, the left and the Congress are together vis-a-vis the BJP. So does this make this state move towards a larger BJP versus... It's not a contradiction. First of all, it's happened before. We have spent 55 years opposing the LDF in the state. And power has alternated between us for the last 55 years. But at the national level, on key issues, particularly the communal issue, they have stood with us. In 2004, they won most of the seats in Kerala, but they supported the Manmohan Singh government when it was formed in 2004. So it's no contradiction. We have, in our country, essentially two sets of elections going on. There is a national general election, but there is also undoubtedly a set of 29, 30 state elections. Because in each state, the political character of the state is different, the history of the state is different, and the realities are different. So here in Kerala, left and us are against each other. Very next door in Tamil Nadu, CPI, CPM, Muslim League, Congress, DMK are all together. Well, on the election trail, the Prime Minister has hit out at the RJD leader Tejasvi Yadav after a video of him eating fish on a helicopter went viral. The Prime Minister said the video showing Tejasvi eating non-vegetarian food was something that was done in an auspicious period when in fact he should have desisted from eating non-vegetarian cuisine. Tejasvi is hit right back. Earlier, several internet users slammed the former Deputy Chief Minister for trying to provoke members of the Hindu community. कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। बिहार के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, पलायन कैसे रोकेंगे इस पे बात नहीं कर रहे। आगे अगर इनको मौका मिलेगा 5 साल तो क्या करेंगे इसके बारे में नहीं बोल रहे। अब क्या कहेंगे? कुछ किया तो है नहीं 10 साल 17 साल में। एमएलए इनका, एमपी इनका, मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, सारा अधिकारी इनका, A to Z इनका, लेकिन कोई काम नहीं। अभी भी बताइए, खाली हिंदू मुसलमान भाजपा के लोग बोलेंगे यही खाएगा, वो पहनेगा, खाली पहनाएंगे, खिलाएंगे, यही बात करते रहेंगे। Kumar joins me now from Patna for more on this. Is this a deeply emotive issue? The timing of that video emerging, the Prime Minister alleging that this is an auspicious time, the RJD saying that no, in fact, it's not shot during an auspicious time. I mean, how do you see this potentially having an impact on the ground? Yeah, Vishnu, especially in a state like Bihar, it is because this is the time of Navratra and you have a Chaiti Chhat which is happening just 2 days from now. So Chhat, you know, is
is a festival which is very important in Bihar as far as the Bihar is concerned. And usually during this period, people refrain from eating non-veg. Now, in this particular case, Tejasvi Yadav claims that this particular video was shot on 8th of April and the Navratra started on 9th. So he said that this was a prank video which he posted, and he deliberately did so because he wanted to test the IQ level of the BJP leaders here in Bihar. And the moment that video actually was tweeted, was put on X, the local BJP leaders, especially like Giriraj Singh, they started making noise about it. They started taking hit at Tejasvi Yadav on this particular issue. And taking it further, the very next day, Tejasvi Yadav actually posted another video of him eating oranges, saying that it's a saffron color fruit which he is eating, and this might actually also not go well with the BJP leaders. But this has completely taken a new, another turn when Prime Minister actually picked up this issue today, and he kind of blown it into a much bigger issue. The BJP leaders of BJP, they were actually targeting Tejasvi on this, and now the Prime Minister have jumped into it. Prabhakar, thanks very much for sharing those details. A four-member government-appointed panel will probe the school bus crash that resulted in the death of 6 students and injured around 20 in Haryana's Mahendragarh yesterday. The accident took place near Unhani village when the bus carrying around 40 students from primary to secondary classes to the GL public school collided with a tree and overturned. An FIR has been registered. Five days in police custody for the 3 people accused in the deaths of 6 children in the horrific school bus accident in Haryana's Mahendragarh on Thursday. The school principal, who did precious little to take accountability, and the drunk driver who rammed the bus into a tree and abandoned the dying children will both be questioned by the police. The GL public school, one of the most prominent private schools in the district, is now in the dock. The police say the school bus was not fit to ferry students and the vehicle documents expired years ago. आज जो 3 आरोपी हमने कल गिरफ्तार किए थे उनको एसएचओ साहब द्वारा पेश किया गया है। 5 दिन का पुलिस रिमांड हमने रिकॉर्ड वगैरह अन्य पूछताछ करने के लिए लिया गया था, तो हमारे को 5 दिन का पुलिस रिमांड कोर्ट ने मंजूर करके दिया है। With disturbing details emerging in the initial probe, the state government has formed a 4-member team to investigate the incident. In less than 10 hours, nearly 12 school buses in the neighbouring Kalanwali district were found to be unfit for carrying students. In the Kanina village of Mahendragarh that lost 6 young children in just a matter of seconds, there's anger and despair. The grieving families demand justice. बच्चे जाते थे, उन्होंने शिकायत करी थी वहाँ पे स्कूल में जाके प्रिंसिपल से कि भाई ये ड्राइवर ठीक नहीं है बस का, इसको बदल दो या इसको ठीक करो, लेकिन उसका कोई सुनाई नहीं किया और आज उसके कारण ये हादसा का अंजाम हुआ। और ये खेड़ी गांव के आदमी ने वहाँ उसकी चाबी ली है उस दिन जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन, और प्रिंसिपल को फ़ोन किया है कि दारू में धुत है ड्राइवर। फिर उन्होंने फ़ोन किया है कि इसका तो रोज़ का काम है, आप चाबी दे दो, ये ले जाएगा, छोड़ देगा, और रास्ते में ये हादसा हुआ है। Vansh, Yakshu, Satyam, Ricky, Yuvraj and Anshu were all less than 17 years old. Their families left devastated and their dreams shattered. With Shubhang Singh Thakur and Ankur Kapoor, Vedant Agarwal for NDTV. The danger of a sharp escalation of the conflict in West Asia increasingly seeming to be imminent, with several countries including India issuing warnings asking citizens not to travel to either Israel or Iran. This is after Iran vowed to retaliate after it blamed Israel for a strike on its consulate in Damascus earlier this month. 13 people were killed in that attack, including a senior commander of Iran's elite Quds force. In a statement, India's External Affairs Ministry has said Indians are advised not to travel to Iran and Israel till further notice. All those residing in Iran and Israel are requested to be in touch with the Indian embassy. They're also requested to observe utmost precautions about their safety and restrict their movements to the minimum. All those who are currently residing in Iran or Israel are requested to get in touch with Indian embassies and register themselves.
And finally, we leave you with these images of Hema Malini on the election trail. Here, catching up with farmers. The former Bollywood superstar is seeking re-election from Mathura.